A very difficult day ahead as far as trading is concerned, ladies and gentlemen. A very good morning to you from a wintry Delhi. This is Shailendra Bhatnagar, your host on Market Today. We are in for pain. Pain which will be felt in the first 1 second of the market when it goes gap down, as is being suggested by the GIFT Nifty. And the reason for that are many. Let's begin with the commentary that the US Federal Reserve has come up with. As was much telegraphed, the 25 basis point rate cut is upon us. And this was already priced in. But what was not expected was the hawkish commentary that the US Federal Reserve came up with, and that resulted in three negatives. One, Wall Street closed much lower. Many indices posted their biggest daily losses in 2024. The US 10-year yield surged to its highest since 31st of May, up 2.84%. The US dollar index was at a 2-year high, 108.4. This is a level that we have last seen in November 2022. And more importantly, the CBOE VIX. Ladies and gentlemen, I have never seen a 75% rise in the volatility and the risk index of the US. These are the three pain points that Indian markets will deal with, and the Nifty, the GIFT Nifty, is already showing a 340 point downtick. Now what has changed? Basically, the US Federal Reserve is now penciling in the arrival of President Trump on the decision-making seat. Mr. Trump is very keen for US economic might to return, which essentially means that money will come back in the hands of Americans and it will fuel inflation. So what the US Fed has said is that the 3 or 4 rate cuts that the market was expecting in 2025 are no longer there. At best, you will have 2 rate cuts. And that's the reason, ladies and gentlemen, the build-up that was there in the market since all of 2024 is now getting unwound, especially on the Dow Jones Index, mainly on the NASDAQ. Look at the S&P 500, and more importantly, look at the US 10-year bond yield. It is again rising, and there is absolutely no incentive for US fund managers to invest in emerging markets when your own market on a basic yield basis is giving you 4.5%. The strength of the dollar, the strength of the US 10-year yield, the fall in Wall Street are all going to impact not only Indian markets but across Asia. You see pain. Look at the Nikkei, look at the Hang Seng Index, look at markets in Shanghai, look at Kospi. All of them are bleeding and bleeding a lot of blood. The same thing is going to happen to our markets as far as the first 1 second of market is concerned. You will see a gap down of about 350 points. That, ladies and gentlemen, is a level where a lot of short covering will come in, because all those people who were looking at the US 10-year bond yield and were looking at the strong sell numbers that were coming in FIS would have pressed short sales on the indices as far as Indian markets are concerned. They will cover in the first 1-2 minutes of trade, and therefore you just might see a spike. But overall, the sell on rise is back. More importantly, there are 2 levels on the Nifty that you need to watch. One is about 23,900 that you will see in the first 1 or 2 seconds of trade. 23,900 is the low of, it's the close of November FNO expiry. If that 23,900 is breached, then the December expiry will come into a negative stance. And then we will see the next low, which is 23,300 or so being tested. Remember, the 200-day DMA on the Nifty is somewhere in the vicinity of 23,650. Now, once that is breached and the markets close below that, then you will see a series of very heavy sales coming into the market. Be that as it may, what we are basically looking for is a painful day, a gap down, and more importantly, post the gap down, perhaps reworking of
the earnings potential of the Indian markets. We are also headed into the third quarter earnings starting January. Second quarter has been terrible. All the macro data that has come in so far in the month of December, be it inflation, be it the trade deficit, be it the Vahan registrations, all of them point to a slowing economy. We are also waiting for Devan Bhai to join us. Mr. Devan Choksi, MD DR Choksi Finserv Private Limited, will be with us. From 9:15 onwards, we'll have Neeraj Gaur, Fund Manager at Axis Securities PMS, joining us. So we'll be looking at quality views coming in from the market. But for the moment, it's going to be tricky. Will the selling pressure on the Nifty and the Bank Nifty also impact the BSC mid cap and the small cap indices? Only time will tell. Remember, valuations there was sky high, but the news flow as also the fund flow into Indian equity markets was fairly strong, and that was the reason why you saw such a strong move coming into markets from November 21st lows. Now it seems that that was a counter rally, which means the markets continue to fall from September 28th to November 21st, and from November 21st to about mid-December they showed a fantastic rise. Now given the sentiment that has come in over the last 3 or 4 trading sessions, and today especially, it seems to be a counter trend rally, which essentially means in a falling market there was a counter trend for a brief 4 or 5 7 days, and that is now getting reversed. So most recent lows will now be tested as far as the bulls and the bears are concerned. The earlier support levels on the Nifty are now giving way. We had hoped that the Nifty would pause somewhere like 24,500, but that did not happen. 24,600 was also given up, and more importantly, there was a very strong reversal that came from 24,800. Twice the market tried that. First on 5th of December when the high was 24,850, and the next time on Friday, December 13th, when this whole carnage started, the high was 24,792. At both times the market rejected 24,800. But why should you listen to me when we have Devan Bhai with us? Devan Choksi, MD DR Choksi Finserv Private, joins us. Namaste Devanji. Fairly painful times coming for Indian equities, most certainly a gap down, and all expectations of a Santa rally are now put on the freezer. How do you see sentiment on the Lal Street, and what do you think will happen? Good morning, Shail. Well, I think a few observations in the market in the recent times. The IPO related stocks which are coming into the market, they are coming in the battalion. Today, I think, suppose year till date in the financial year 24-25, you have probably experienced, I think, more than 70 stocks which have got listed into the market up till now. With some months like September, I think have been exceptionally high months as far as the new listings are concerned. And this month is not going to be slow months. I think this is December, I think, which also we are likely to see around 15 odd stocks ultimately getting listed by the end of the month. So all in all put together, if you have to see where exactly the money is going from the secondary market, listed names, established companies, the money is being taken out, money is going into either the pre-IPO subscriptions or anchor investment or post-listing. This money is further getting expended or spent or invested into these stocks to take up the stock price to a higher level, so that when the lock-in period ends, at that point of time, they get the right kind of exit. So there's a systematic shift happening. Fund investors are playing around with this particular shift. And why not? I think they're getting significantly large sum of appreciation on the investors' money in this entire game. The lacuna in the system is established. Regulator meeting undue volatility. Volatility does also exist, I think, in the other markets of the world. It's not a question. But at the same time, I think wherever I think the misuse of the system is happening, it's our job to basically point it out. And that's where I believe that I think investors should remain conscious about it. Nothing wrong with the fundamentally strong companies which are in the listed market, even though they may not be performing on the stock price front.
They are performing on the company's result, etc. Whereas new listed companies are still struggling to even perform on the P&L side of the activity. So maybe I think one will find rationalization or realization at some point of time. Devin bhai, in the many decades that you've been a part of Dalal Street, as an individual investor and of course as one of the finest advisors on long-term portfolio gain, you have seen such volatile times. But CBOE VIX up 75%. I don't remember any time that you and I would have seen that in the last 20, 25 years. How do you how do you sort of plan for this kind of a day when an index that denotes fear rises by 75%? So, Shailendra, those good days, I think when I used to be playing cricket at the school levels, we had learned one technique that whenever there is a bouncer, I think duck. I think in the market also, I think whenever the bouncers come, you have to duck. As an investor, I think you have to allow the noise to cut. As an investor, you have to allow the rough weather to pass. That's where the patience pays, and that's where the maturity works. So, in my viewpoint, I think this kind of volatility are not permanent. It is due to various reasons, and those reasons are best known to everybody. Frankly, I think my job as an investor and advisor to investor is to stay out of this particular storm that is happening in the market. Let it get calmed down, and probably I think your investment will look up once again because the fundamentals of the business they don't go away because of whatever the volatility that we are talking about. Added to this carnage that is because of Wall Street are very, very bearish and aggressive comments that are coming in from President elect Mr. Donald Trump. What is he trying to do? Is he trying to bring down markets till Jan 20th when his term starts, and then of course you will calculate the percentage rise from the day he assumes charge? What is he doing, scaring global investment into the US as also, emerging markets and everyone? What do you think is his strategy? And I think I know one thing that he has a 4-year term. And in this 4-year term, I think whatever the promises that he is making, he has to deliver. Because America is one such country, I think, which demands, which asserts, I think, on whatever the commitments that the president or the incoming president is giving. So in such situation, I believe that I think the job will be to see how exactly he delivers. Maybe at this point of time, I think he is probably spelling out his intention. At some other point of time, after having spelled out the intention, I think we have to deliver. As far as I understand, I think this is the chance probably I think the Republicans have to put back American economy to the path. I think at least the growth takes place. Unfortunately, subsequent to Bill Clinton in Democrats, I think the American economy hasn't been handled as well as it should have been handled. And that's the reason for which I think last 15, 20 years of whatever the debt situation that has got created. Maybe this is a chance that one will have to execute, and let's see how exactly it happens. But I don't think that it is against any such kind of move is against India or for that matter, I think our businesses. On the contrary, I believe that I think it should be helping India for good because Make in America is his demand, and that's where probably India could be, I think, stepping in as a good partner to that. In making America great again and bringing America to where it is at the moment in terms of economic superiority, in terms of tech expertise. It's the Indians who run the Silicon Valley. One really fails to understand why Mr. Trump is trying to scare away very quality investment as also phenomenal inputs that the Indian community has given to the US. They are one of the most, how should I say, cerebral and the largest contributing community in terms of good that has happened in America. Be that as it may, we'll see how it goes. Devin bhai, we have this phenomenal error that has come into calculating the trade deficit, and perhaps that was
the start of the selling point in India. This revision of trade deficit, do you think, which is probably in the offing, will help the rupee and probably add to some kind of sanity in the markets? Not too sure. I don't know. I think how exactly this is going to be playing out. See, I'm not totally against. I think the trade deficit happening because I think there's a situation which is out of your control at the same time. And frankly, I think on one side you are having the import bill to pay. On the other side, you have got the lullness in the global market as far as their, uh, their market demand is concerned. So certainly, I think we are not going to be exporting as much as I think we would otherwise have likely to be. So industry has its own challenges. Uh, as far as we all understand, I think the government is trying their best to I think remove the bottlenecks from within the country and allow the industry to probably I think flourish as much as they can. The challenges still remain because I think the bureaucracy acts I think much stronger than the minister's statement. So that is where probably I think we are having a challenging situation in delivery. But this trade deficit situation is unlikely to go away in a hurry. In my viewpoint, I think we will have a systematic reduction in trade deficit, provided I think our renewable program accelerate faster, which I believe is accelerating, but I think it should accelerate faster. So let's wait and see on that front, but not too much perturb about I think that particular aspect at all, as far as I think our deficit issue is concerned. Devin bhai, my apologies for continuously discussing, painful data. You look at Vahan registrations between 1st December and 17th December. They've just, gone off the charts in terms of a fall. Passenger vehicles, two-wheelers in particular. What is ailing the auto space? Are companies not launching new models at the right price point, or is this a case of decreasing disposable income in the hands of potential buyers? Which side of this debate do you stand on? Well, I think disposable income in the hands of buyers is increasing, so I think there is no question about that part of it. When you see the per capita income year after year increasing, I think you get the validation of this. The challenge is on the other side. The challenge is that the consumer is wanting to buy an electric vehicle. He is not getting at a price point at which he wants to buy. So as a result of which he is resorting to the MIT arrangement in which I think he is going for a pre-owned vehicle buying. In the pre-owned vehicle buying, I think is also satisfying his need. At the same time, I think the cost is lower. So there is a significantly large growth in the pre-owned vehicle market vis-a-vis the OEM market today, as far as IC engines is concerned. The way I was reading the data of China the other day, the amount of batteries for electric vehicle that they produce, they actually among the first six countries of the world, China's share is 77%. It's mind-boggling. The electric vehicle batteries, the top six countries of the world, China's share is 77%. The other countries of the world, including the Europe and other places, I think they are in a single digit, lower single digit, less than 5%. So actually speaking, I think you are basically, I think, asking for reduction in the price of electric vehicles, and that's what is likely to happen. Consumer is smart; he is waiting for that thing to happen. My take is that 2025 onwards, you are likely to see the change in this particular thing. Maruti's entry into electric vehicle is going to be seen as a very interesting proposition because they have been very successful with their model launches, and whenever I think they have created a new category, they've been extremely successful. I think, including the premiumization of the vehicles through SUVs. So, in my viewpoint, I think 2025 could be giving you some answer to how the demand once again starts rising. But I am optimistic about it that the electric vehicle segment will be the leader as far as demand growth is concerned, particularly for four-wheeler passenger vehicles. Right. Devin bhai, before, the pre-open is upon us and it's a disaster. 2.9% lower, 615. Let's hope it improves for the better. Now 585 down, 560 down. What's in pain? I believe tech will be in tremendous pain. Okay.
TCS down 5%, 4130. Infosys down 2.9%, 1925. What are the pain points in terms of percentage fall? ICICI Bank down 5%, 1248. State Bank of India down 3%, 813. Infosys slips 2.7% lower. The Nifty is down 581. Let's look at the NSE 500 and look at the pain points. Okay, Reliance 1.26% lower as far as the Nifty is concerned. That's painful. M&M is down about 1%. Federal Bank down 1.5%. There is pain all around. Okay, UTI AMC, ICICI Securities, all showing double-digit losses as far as prices are concerned. What we'll do is we'll let them settle. There's no point showing the Nifty down 500, 550 points unless it is settled. Devan bhai, what would you be advising your top equity holders in terms of clients? Let's go on a holiday till December 31st. Markets will be better. Let's try and put in more money, break fixed deposits, and buy some quality stocks. Reliance is available at multi-month lows below 200-day DMA, and it will get juicier still today. What should you do in the next 5-7 trading sessions? Is this an opportunity, or are we headed permanently lower now? Shail, I think we have been buying in this particular month, and selectively though, because I think this is something which we do, I think, for buying the portfolio whenever the market gives an opportunity. We have been liking some of the quality names in companies like Bajaj Housing Finance, Tata Technologies, even for that matter Reliance, some of the Adani group companies like Adani Port. We believe that the fundamentals of these companies and the business, they remain absolutely intact. On the contrary, we believe that I think these businesses are growing and they are giving you the visibility for next 10 years now. So we believe that I think this is where probably we should be putting more money into this stock. And good question that we are asking all the clients probably to start putting money into some of these companies, and happily clients are putting in because we refrained in the momentum-driven runaway market in the past from buying into the momentum-driven stocks and getting stuck into them. So I think the quality money is available for deploying into some of the good quality fundamental stocks, and investors are investing. I'm happily saying that. Okay, 200-day DMA, ladies and gentlemen, is upon us, 23,600. This is a gap down to the extent of 575 points. And let us see how the Nifty settles at 907. Devan bhai, according to you, what is the right value of the Nifty? Now that US 10-year bond yield is above 4.5, dollar is above 108, and of course, you see very heavy sales coming into Wall Street. How do you think and where do you think the Nifty should be around February 1st? So, frankly, I think having seen the market in last almost 40 years now, what I have discovered is that whenever the Nifty's price earning ratio has moved about 22 times, for whatever good reason, I think the market valuations haven't sustained, the Nifty valuations haven't sustained. And thereafter, I think the valuations have come down. And I think the good average valuation in a bull market has been around 20 times, 19 to 20 times. And definitely market becomes extremely attractive when market valuation falls below 20 times, Nifty valuation falls below 20 times. And buyings have emerged, I think, when the Nifty has gone below 20 times of price earning ratio. Now, in this situation, I think on a forward earning estimate basis, assuming that the growth in the Nifty stocks, I think, is at around 15-16%, the valuation wise, Nifty is currently available below 20 times price earning ratio, 1.5 year forward from now. And that's where probably I believe that I think the buying should emerge. Whether it should emerge in December, January, or February, I think the time will tell, because we are not a timing expert. But we know that the valuation wise, the attractiveness is increasing in many of the good quality counters. And there would be a surprise element
with some of the commodity counters like metal commodity, wherein you are likely to see the firming of the price as against, I think, the softening of the price. China is definitely, I think, softening the metal commodity price because they have got higher amount of renewable mix and that's the advantage they are taking. But all said and done, we believe that I think the demand growth would probably drive the metal prices in the 2025 period. So that is where probably I think we are relatively bullish about the prospects for the metal as a commodity person. Okay. Uh, I don't know whether this is sensible or not, but now the loss is 340 points, just as the gift Nifty pointed out, 23,860. We still have about a minute to go. So, ladies and gentlemen, most likely you will see a gap down opening, after which the Nifty will flatten out and maybe, just maybe, an intraday bounce, which will again be sold into. Devan bhai, the rupee now at a record low 85.05. Where do you see this headed? And within pharma and within IT, the two biggest beneficiaries of a weak rupee, where would you place your bets? So again, I think the learning says that I think the weaker currency, the advantage lasts only for a quarter. After that, it gets evened out, and probably I think the price adjustment takes place into the books. So I'm not a firm believer of I think weak currency and betting on IT and pharma for that matter. Both IT and pharma, their own opportunities are around. In mid-tier IT, the engineering R&D space, EMS space, I think we are basically seeing a significant amount of growth opportunity for some of the companies. In pharma, the contract manufacturing space, CDMO, and the API space, where probably we are finding the opportunities increasing. Complex generics, specialty generics, players like Sun Pharma, Cipla, Dr. Reddy, the opportunity wise, I think they are relatively much better placed than what they were before. So that much we know. And we believe that I think these companies hold the potential to probably bring the growth in vicinity of around 15% plus in coming year and thereafter. So we certainly like to, I think, stay with this kind of companies for investment portfolio. Not that we are against, I think, some of the new emerging companies, but we believe that I think till the time you have a sustainability factor established in them, serious money cannot be allocated to them. I think part money that we allocated, one can trade the position thereafter. So that's what we do as far as I think our approach to the weaker currency is concerned. Okay, just a detour into the markets. The pre-open has settled. Just as the gift Nifty suggested, 320 point downtick on the Nifty. There are no gainers. All 50 shares of the Nifty are opening in the red. The Bank Nifty is down 710 points. The IT index is mirroring the fall on the Nasdaq. 2.3% lower, 1033 gone, 44,493. Remember, one of the biggest rallies that we've seen has been in the IT space over the last 6 months or so. The IT index has been at a record high. So not only money, but a lot of sentiment also getting vitiated on the IT index. With a gap down of 50 shares in negative territory, I think that intraday the worst seems to be over. The market will flatten out once it opens, and then 23,870 is what we are dealing with. This is lower than 23,920, which was the November FNO expiry close. So, ladies and gentlemen, December expiry now walks into negative territory. The low for November was 23,300. Let us see how that reacts. We will also be joined very shortly by Mr. Neeraj Gaur, fund manager at Axis Securities PMS. We'll wait for him. But Devan bhai, at this stretch of time that we are dealing with, what about Reliance? There was a recent report that came into CLSA, and it pointed out the fact that the market was missing the inflows that would come in because of their solar glass business. What is your gut feel on Reliance at about 12.20? Let us see
where it has settled in today's trade. Reliance is 1239. What would be a good strategy as far as RIL is concerned? It's a simple word actually. I think one can go into. Reason very clear. On the consumer facing businesses side, the Geo platform and Reliance Retail, both of them are, I think, producing a sustained growth in excess of 15% as far as the EBITDA earning is concerned. And Geo platform definitely, I think, is around 20% kind of a growth on a 60,000 crore base of EBITDA. So certainly, I think they are promising to double the size of the balance sheet in 3.5, 4 years time, as far as I think the business is concerned. So when the date this particular business gets separated, listed, and monetized, that would be the time when investors get the reward in the balance sheet in the investment portfolio. So that is why I think one should be buying in the corrected market. One do not know, I think, how much I think correction is happening in the market of this kind of for this kind of stock. But certainly, I think it's an advantage that you're getting at lower levels because the renewable segment of the business, which is likely to be announced as far as I think the commercial operations are concerned in a systematic manner, is also going to be producing significantly large sum of revenue. And as I understand, 75,000 crore worth of investment that they are doing in renewables would have the cash payback period of 3.5 to 4 years. So certainly, I think in coming 3 to 4 years also, you have a distinctly high amount of visibility even from the renewables. So my point is, I think there is a buy opportunity at lower levels. Maybe some of the negatives, but they're getting factored into the price now. Fair point. Let us see how Reliance closes today, and then we will, of course, see how it pans out. Devan bhai, one interesting thing that happened in the markets yesterday was the mega listing of MobiKwik, Sai Life, and of course Vishal Megamart. All three of them must be thanking their stars that they got listed on 18th of December and not 19th. Within these three, is there something that catches your fancy for the long term, and what is the price that you would probably enter into MobiKwik? Interesting question. Second one I would answer first, the price at which you would like to enter into. I find that the valuations are not justifying the growth that these companies are producing. In case of MobiKwik too, I think if they are a powerful fintech company, I agree, but the penetration and acquiring the new customer is becoming a challenge. I think it's a cost I think that they probably have to put in. And that's what I think is going to be the challenge that one will experience in subsequent quarters. No doubt they have collected money from this particular IPO and they will have the spending power. But the fact remains that I think it's not going to be coming without the share of loss that they will have, at least to begin with, when they acquire the new customers. Similar would be the situation with, I think, the distribution product businesses they are getting into. And in my viewpoint, I think the Geo, through the tie-up with BlackRock, is going to be again going to be a significantly large player in 2025 who is going to disrupt the distribution market using the fintech platform. So I would be extremely careful about paying the price to these companies because valuations are not cheap. They are expensive at this point of time. And maybe I think the market is running with momentum, so it may further go up. There is no doubt about it. But the fact remains that I think as an investor, I will be mindful about not paying the premium at this product. Right. Devan bhai, thank you so much for your time, and the merriest of Christmases and the best of luck for 2025. I'm sure we'll meet again, but till then, have a nice time. Thank you, Shail. Wish you all the best as well. Okay, ladies and gentlemen, we start this terrible day with a gap down, but it seems that a lot of short covering is already happening. Just 220 points lower, 23,900. 24,000 will be back with us. 600 point cut on the Nifty Bank. Nifty IT is 850 points lower. The NSE 500 is down to 91. What is now a pain in the market? ICICI Bank down 17 rupees. TCS down 23 rupees. State Bank of India down 14 rupees. Infosys down 42. You have Kotak Bank down 18. Is there anything in the green? It is. ITC 1.8 rupees higher,
472. Dramatic improvement happening in the Nifty. Remember, this is just short covering. All those people who had punched in short trades are now covering them, and this gap up is this gap down is slowly narrowing. But let's hope that the best is upon us. Most active counters. You have a block deal happening on DOMS, 2914 down 4.6%. HDFC and ICICI Bank are down 1.1, 1.6% respectively. Reliance is down 0.9%. I want to see what the new kids are doing. What is MobiKwik up to? Okay, MobiKwik is up 1.5%, 532. That is an important counter to watch. Very quickly, what we'll do is we'll get in touch with our new guest. We have Mr. Neeraj Gaur, fund manager at Axis Securities PMS with us. Neeraj ji, good morning, namaskar, स्वागत है आपका. भारतीय बाजारों के लिए परेशानी का दौर चलता हुआ दिख रहा है. किस हिसाब से आप सेंटिमेंट देख रहे हैं दलाल स्ट्रीट पर, और क्या कीजिएगा आज? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. हमने कल देखा कि फेड ने रेट कट किया एज एक्सपेक्टेड, बट कंसर्न लोगों को यही है कि जितना मतलब इन्फ्लेशन के कारण जितना रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना रेट कट आएगा नहीं, राइट? सो नाउ द प्लॉट इज सेइंग दैट द रेट विल बी एट 3.9, राइट? It's like there's a difference of 50 basis points versus what the market was expecting. तो यहाँ पे एक expectations का है कि versus expectations जितने rate cuts market ने build in किए थे उतने rate cuts market में नहीं होंगे, right? क्योंकि inflation higher है और inflation normal होने में Fed कह रहा है कि 26 में भी normal नहीं होगा, 27 तक जाके inflation 2% target पे reach करेगा. तो इसलिए डेफिनेटली ये है. और आपने देखा कि मतलब यूएस मार्केट्स हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स, राइट, अक्रॉस द वर्ल्ड. सो देयर इज अ प्रॉफिट बुकिंग व्हिच इज हैपनिंग देयर ऑन अ हायर वैल्यूएशन. नथिंग और टू बिग कंसर्न, राइट? ग्रोथ इज प्रीटी गुड व्हिच द फेड इज सेइंग. दे सेइंग अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, बट गिवन जहां मार्केट का जितना सिग्निफिकेंट रन अप आया था, देयर विल बी अ फेज ऑफ कंसोलिडेशन in the markets. Indian market obviously take cues from both the global markets as well as domestic factors. तो हम हमेशा ये भी देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है और हमारे फैक्टर्स क्या हैं. एनीवे हमारे मार्केट में हम बहुत ज्यादा रेट कट बिल्डअप कर नहीं रहे थे, राइट? एक तो लिक्विडिटी डेफिसिट चल रहा था जो आरबीआई ध्यान रख रही है, सीआरआर कट किया है, लिक्विडिटी इंप्रूव कर रही है. उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन है कि फैब में बेसिकली एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ सकता है. बट हमने बहुत ज्यादा रेट कट इंडिया में बिल्डअप किए नहीं है एस्टिमेशन में और एक्सपेक्टेशन में. तो इसलिए इंडियन मार्केट में मैं रेट कट्स का बहुत ज्यादा कंसर्न देखता नहीं, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट अभी भी आ सकता है. उससे ज्यादा रेट कट का एक्सपेक्टेशन इंडियन मार्केट में था नहीं. तो ये जस्ट कंसोलिडेशन का फेज है और ये कोई भी मतलब फ्रॉम अ 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू इस पे कोई कंसर्न नजर नहीं आता. जी, ये तो आपके सामने हाँ नीरज जी की राय आती हुई दिख रही है. बाजार में जो एक इनिशियल स्पर्ट था वो अब आपको वापस बिग वाली में तब्दील होता हुआ दिख रहा है. काफ़ी सेलिंग प्रेशर. NSE 500 में ज़रा नज़र डालते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉप लूज़र्स में नज़र डालता हूँ मैं. L&T Mindtree 6270, 4.5% नीचे. पॉलिसी बाजार 3.5% नीचे. एम्फोसिस 3.6% नीचे. वेदांत, विप्रो, क्राफ्ट्समैन, ऑटोमेशन सब में आपको लाल निशान दिख रहा है. एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखते हैं. मैं आपको क्या जिक्र करूं, 165 शेयर हरे निशान में हैं मुकाबले 2040 जो कि आपको लाल निशान में दिखेंगे. एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल आप समझिए कि स्क्यूड है बेयर्स के फेवर में. हम लोग 19 इंडेक्स ट्रैक करते हैं, 19 के 19 लाल निशान में हैं. मेटल्स और आईटी इंडिसेस में सबसे ज़्यादा बिकवाली. ध्यान दीजिए, मेटल्स डॉलर इंडेक्स पर काम करते हैं, उसके विपरीत जाते हैं. अगर डॉलर इंडेक्स में तेज़ी है तो मेटल्स में आपको कमज़ोरी दिखेगी. 2.1% नीचे, 8886 मेटल्स इंडेक्स. आईटी इंडेक्स 44,590, 2% नीचे.
कई ऐसे इंडिसेस हैं जहां पर एक भी शेयर आपको हरे निशान में नहीं दिख रहा। निफ्टी में सिर्फ 3 शेयर हरे निशान में है, निफ्टी फार्मा में 3 शेयर हरे निशान में है, और NSE 500 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है 12 मुकाबले 488। बिकवाली बहुत ज़बरदस्त दौर से आपको फिलहाल चलती हुई दिख रही है। इंडिया विक्स 7% ऊपर, फिलहाल 15.37 पर। नीरज जी, चर्चा आपसे शुरू करते हैं। इसमें आप किस तरीके का अपने राय देते हुए दिख रहे हैं PMS क्लाइंट्स को? क्या नज़रिया आगे आने वाले समय के लिए इस मैक्रो एनवायरनमेंट में जहां पर अब परेशानियां ज़्यादा और अपॉर्चुनिटीज़ कम दिख रही हैं? क्या राय देते हैं आप HNIs को? राइट शैलन जी, आपने देखा है कि अब इन्वेस्टर्स भी बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। तो आपने देखा है कि जितने भी डिप्स मार्केट में लास्ट 2-3 साल में आए हैं, तो इतना उन्हें क्लियर हो गया कि बाय द डिप, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी हैज बीन वेरी रेजिलेंट। ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में दिस ईयर बिकॉज ऑफ इलेक्शंस गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग नहीं है, कैपेक्स काफी कम रहा है, तो अब वो एक्सेलरेट कर रहे हैं स्पेंडिंग करना। तो हमने देखा काफी इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड कंपनीज में अर्निंग ग्रोथ फर्स्ट हाफ में काफी म्यूटेड रहा है, ऑर्डर्स नहीं मिले हैं या एग्जीक्यूशन नहीं है, तो वो पिकअप सेकंड हाफ में आना आएगा। तो हम इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि आप एटलीस्ट 1 साल का पर्सपेक्टिव रखिए। अगर हम 1 साल का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो जैसे फर्स्ट हाफ में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं था, बट सेकंड हाफ बेटर होगा, तो FY25 में 8-9% का अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर FY26 में अगेन we'll see 13-14% earnings growth. So Axis Securities is saying, if we give a market multiple of 20, right, on a December 25-26, right, we'll get a Nifty level of roughly about 26,100. तो यहाँ से आज जो मार्केट का लेवल है 23,600 वगैरह से, वहां से हमें क्लियरली डबल डिजिट रिटर्न्स दिख रहे हैं मार्केट इंडेक्स लेवल्स पे। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारी कंपनीज है, शैलेंद्र जी आपको पता है 2000 से ज्यादा एक्टिवली ट्रेडेड काउंटर्स हैं हमारे यहाँ, राइट, जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ हमें भले निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ 12% है, बट बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे हमें अर्निंग्स ग्रोथ 20% दिख रहा है या वैल्यूएशन भी अच्छा दिख रहा है। तो हम इन्वेस्टर्स को एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपना SIP कंटिन्यू रखिए मार्केट्स के अंदर, ग्रेजुअली मनी को डिप्लॉय करते जाइए। चैलेंजेस आते रहेंगे, जैसे अभी रेट कट का देखा, या ट्रम्प के अराउंड आने पे भी कुछ पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं, तो उससे मार्केट जनवरी तक भी वोलाटाइल रह सकता है। बट ये अपॉर्चुनिटी है अपने इन्वेस्टमेंट्स को और ऐड करने के लिए, और हम 2 चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। एक तो कि हम क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स करें, खाली हाई बीटा को नहीं चेज करना है, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स, एंड जहाँ पे लिक्विडिटी है, ताकि अगर कोई भी चेंज ऑफ व्यू है तो we'll be able to exit for our investors. So our clear focus is on quality and liquidity for all the investors we are making, Shailendra ji. चलिए, काफ़ी सटीक राय है। इन लेवल्स पर नीरज जी, कोई शेयर आपको पसंद आता हो जो आप सिप के ज़रिए लंबी अवधि के पोर्टफोलियोज में ऐड करना चाहेंगे? इस गिरावट का फ़ायदा अच्छे और समझदार निवेशक कैसे उठाएं? राइट, एक तो शैलेंद्र जी, जब भी करेंसी पे प्रेशर आता है तो जनरली हम मार्केट में ना 2 सेक्टर्स पे बात करते हैं, कि फार्मा और IT, क्योंकि दोनों सेक्टर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, राइट, डॉलर में उनका बिलिंग वगैरह होता है। बट हमने स्टडी किया है कि भले ही करेंसी डिप्रिशिएट हो जाए, IT सेक्टर के मार्जिन्स इंप्रूव नहीं होते, जबकि फार्मा में अगर आप स्पेशलिटी ड्रग्स वगैरह कर रहे हो तो आप वो बेनिफिट रिटेन कर सकते हो, IT में आपको वो पास ऑन करना पड़ जाता है। तो एक फार्मा बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है जहां पे उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा करेंसी डिप्रिसिएशन वगैरह का। और आपने देखा है ओवर लास्ट 1 ईयर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बहुत अच्छा किया है यूएस में प्राइस इरोजन भी कम हो गया है, स्टेबल है, और बहुत स्पेशलिटी ड्रग्स में इंडियन कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने स्पेशलिटी ड्रग्स किए हैं, इंजेक्टेबल्स, पेप्टाइड्स किए हैं। स्मॉलर फार्मा कंपनीज ने भी ग्लोबल कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, इंटरमीडिएट सप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो पाइपलाइन है हमारी लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप फार्मा कंपनीज की, वो बहुत रोबस्ट है इस वक्त। लार्ज कैप फार्मा में लोग सिप्ला जैसे नाम देख सकते हैं, स्मॉल कैप फार्मा नेम्स में एमी ऑर्गेनिक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं।
उन्होंने एक बेयर का ड्रग है प्रोस्टेट कैंसर का, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एंड दे आर ग्रेजुअली इंप्रूविंग द सप्लाईज। वो ड्रग खुद 1.5 बिलियन यूरो से 3 बिलियन यूरोस के पाथ के ऊपर है, तो वहां पे इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। जैसे हमने कहा लार्ज कैप में सिप्ला देख सकते हैं, सिप्ला का बहुत रोबस्ट पाइपलाइन है एंड सिप्ला का सिग्निफिकेंट रेवेन्यू मोर देन 40%, रफली अराउंड 45% कम्स फ्रॉम इंडिया एंड द मोस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी अबाउट 60% प्लस कम्स फ्रॉम इंडिया। तो उसके मद्देनजर उसका वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल है। तो ये दो काउंटर्स में फार्मा में लोग ग्रेजुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलें जी। जी जी एक आध बात मैं ज़रा बाज़ार में बताना चाहूँगा। बहुत सारे शेयर्स आपको गैप डाउन में खुलते हुए दिखे थे, लेकिन अब कई शेयर्स में आपको दिन का हाई लेवल आता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए, जो हमने एक बिकवाली देखी थी गैप डाउन की, वो बाज़ार ने एब्जॉर्ब करी। वहाँ पर शॉर्ट्स आए उन लोगों के जो पिछले 2-3 दिन से गिरावट के दौर को बहुत बखूबी खेलते हुए दिख रहे हैं, और अब आपको कुछ शेयर्स में बहुत अच्छी बाइंग दिख रही है लोअर लेवल से। ग्रैन्यूल्स इंडिया 592 रुपीज़ 30, ये आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आरबीएल बैंक 164 रुपये, डाउन 1.1%, लेकिन दिन का हाई। मैस्टेक 3175, यहाँ पर भी आपको दिन का हाई लेवल आता हुआ दिख रहा है। कैम्स 5030, दिन का उच्चतम लेवल। एसआरएफ, एसजीवीएन, आईईएक्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सिंजीन, इन सब शेयर्स में आप एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। यानी कि इस लेवल को, जो कि कुछ समय पहले था, बाजार खरीद रहा है। बॉटम फिशिंग चलती हुई दिख रही है, कितना चलेगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आपके सामने फिलहाल निफ्टी 23,905, 300 अंक नीचे। निफ्टी बैंक 750 अंक नीचे। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 750 अंक नीचे। और निफ्टी 500 में आपने लगभग 277 अंक की गिरावट देखी है। वापस एडवांस डिक्लाइन पर नज़र डालेंगे, ये आपको बताएगा कि मूड माहौल क्या है। ध्यान दीजिए, शुरुआती सत्र में 50 के 50 निफ्टी के शेयर लाल निशान में थे। अब देखते हैं कितने लाल निशान में हैं। अभी भी 48 शेयर लाल निशान में हैं। निफ्टी 500 पे ध्यान दीजिए, शुरुआती सत्र में 12 शेयर लाल निशान में थे, माफ़ कीजिए, सिर्फ 12 शेयर हरे निशान में थे, अब 32 शेयर हो गए हैं। तो इस हिसाब से जो बॉटम फिशिंग हो रही है बाज़ार में, वो आपको अब सेंसिबल और अच्छे शेयरों में ख़रीदारी करते हुए दिख रही है। देखते हैं कौन कौन से काउंटर्स हैं एनएससी 500 में जो अब आपको हरे निशान में आते हुए दिख रहे हैं। पूरा का पूरा फार्मा मार्केट, डॉक्टर रेड्डीज, ध्यान दीजिए, एक कमज़ोर रुपया, डॉलर की मजबूती एक अच्छा मुकाम लाती है फार्मा और आईटी काउंटर्स के लिए। डॉक्टर रेड्डीज 1.5% ऊपर है, 1295। जेबी केमिकल्स एंड फार्मा लगभग 1% ऊपर है, 1871। नैटको फार्मा, टोरेंट फार्मा, इरीस लाइफ साइंसेज, इप्का लैब्स, लुपिन, अबाउट इंडिया, ओरो फार्मा, कई ऐसे काउंटर हैं फार्मा स्पेस के जो अब आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे, क्योंकि फार्मा की दिग्गज कंपनीज का 50 से 60% टर्नओवर आपको यूएस मार्केट से आता हुआ दिख रहा है। खासी खरीदारी हो रही है लोअर लेवल्स पर आईटी क्षेत्र में, और वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आपको मैस्टेक 3177 पे चल रहा है, जस्ट 0.6% नीचे। आइए ज़रा आईटी इंडेक्स पर थोड़ी नज़र डालें और आपको बताएं कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो किस तरीके से आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे दिन का लो देखना पड़ेगा, लेकिन अच्छा खासा मूव हरे निशान की तरफ बाज़ार बढ़ता हुआ। निफ्टी अभी भी 23,890, 310 अंक का लाल निशान। नीरज जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस है, यहाँ पर अच्छी मोमेंटम दिख रहा है। ब्रोकरेजेस हों, बीएससी, कैम्स, के फिनटेक, काफ़ी अच्छी चाल आती हुई दिख रही है। किस हिसाब से आप वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस को एनालाइज करते हैं और क्या लगता है, कुछ खरीदारी करें या इससे दूर रहें?
लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इस सेक्टर के बहुत अच्छे हैं क्योंकि ज्यादा लोग फाइनेंशियलाइजेशन में और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स फॉर वेल्थ मैनेजमेंट, ऑल सर्विसेज लाइक CDSL, के fintech, etc., and people who are into multiple products, right? All these capital market participants will do very well over next 5 years. बट यह है कि मार्केट ने काफी इस न्यूज को फैक्टर इन कर लिया है कि ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं यहाँ पे, तो उसके वैल्यूएशंस में ये अजम्पशंस जा चुके. बट इन नियर टर्म जो ब्रोकिंग से जिनका वॉल्यूम्स ज्यादा आता है, आपने देखा जो सेबी के F&O के रेगुलेशंस आए हैं और रेगुलेशंस आगे भी और चेंजेस आएंगे, उससे 10 से 30% तक ब्रोकिंग साइड पे, वेल्थ साइड पे नहीं लेकिन ब्रोकिंग साइड पे ये मानना है ऑन एन एवरेज, हर कंपनी का थोड़ा अलग होगा, 10 से 30% के बीच तक उनपे इम्पैक्ट आ सकता है ब्रोकरेज वॉल्यूम्स या जो उनके F&O के प्रीमियम्स वगैरह पे हैं. तो वो हमें उन बातों का ध्यान देना पड़ेगा कि वो थोड़ा वहां पे उनका इम्पैक्ट है ब्रोकरेज कंपनीज पे. बट वेल्थ कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, दे विल कंटिन्यू टू डू वेल, दे विल नॉट बी इम्पैक्टेड बाय द ब्रोकिंग एंड F&O रेगुलेशंस. शैलेंद्र जी. जी 9:32 हो चुके हैं देवियों सज्जनों. काफ़ी मोमेंटम आपको बाज़ार में अब आता हुआ दिख रहा है. मैं बताता हूँ कौन कौन से शेयर्स दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहे हैं. कोरोमंडल इंटरनेशनल को देखिए, फर्टिलाइजर स्पेस से 1834 अब 0.2% ऊपर. मन्नापुरम फाइनेंस डेज हाई 175.6. लेट्स लुक एट the PSU space and find out. And I'd like to mark MobiKwik 12% higher, 12.4% higher, 596, 598 now. Neeraj ji, would you have a view on MobiKwik? नहीं शैलेंद्र जी, हमने मोबीक्विक नहीं देखा क्योंकि एज ए PMS हम IPO में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. तो कंपनीज के IPO के बाद ही, आने में लिस्ट होने के बाद हम उनसे मिलते हैं और फिर उन्हें इवेल्युएट करते हैं. अच्छा चलिए, लेकिन फिलहाल जो बाजार में तेजी दिख रही है उन काउंटर्स में, चलिए 603 हो गया मोबीक्विक आपके सामने, 14% हायर. लेट्स लुक एट स्टॉक्स दैट आर हिटिंग moves. Okay, Shalimar Paints 6.9% higher, 132.75. We have Thomas Scott 5% higher, 433. This is again a textile company. A strong move is coming into Cronox. This was a recently listed IPO, up 4% as far as markets are concerned. Blue Jet. This is Blue Jet Medical Services that Mr. Arun Kejriwal had marked yesterday as quality buys at current level. So you have Blue Jet 589, 587.40 now, still up 2.4%. So there is quality being purchased into. Let's look at some other stocks. Okay, MobiKwik I have marked. Uni-Info 46.64, up 12%. Are there any counters that have hit record highs? Let's check. Okay, K Fintech is up 1.4%, 1348. We've marked both Thomas Scott and Blue Jet. They are doing pretty well, and the rest of the names I'd rather not say. In top traded counters, we have DOMS, which is a stationery maker. A block deal has just happened on this one, down 3.6%. A lot of activity still happening on Vishal Mega Mart, now down 2.5%, 109. This was recently listed, and it's a sea of red. In the top 35 traded counters by volume, only 2 are in the green, and both of them are recently listed, MobiKwik and EIEL. That is how the markets are structured at this point of time. In the first 20 minutes, the Nifty is still down 300 points. Nifty Bank is down 750. IT index still down 672. Remember, the IT index was down 1,000 points, and it's being purchased into.
Still, a lot of stocks are continuously hitting intraday highs. They may be in negative territory, but this is the buying. Look at Persistent, Canara Bank, Ipca Lab, Coromandel International, BSE, Exide, Motilal Oswal Financial Services. People and smart investors are using this opportunity to get back into the market in quality stocks. Let's look at some other numbers that are coming in. Just a moment, let me just tweak this software to show you some interesting data. Okay, look at Jubilant Foods in the green, 677, up 0.3%. Look at United Breweries, 2021, 0.27% higher. City Union Bank in the green now, 179.60. Let's look at stocks in the NSE 500 which are showing activity. Look at LG Equipment. Look at DB Realty, 0.1% higher. NLC India, 0.6% higher. Quest Corp, 0.2% higher. So quality is getting purchased into, and that is what needs to be highlighted. Neeraj, you must be also watching the trade on your screen. What looks good as far as today's market is concerned? आपने बिल्कुल सही बोला शैलेंद्र जी, ये सब अपॉर्चुनिटीज डिप्स पीपल विल यूज देम टू बाय क्वालिटी नेम्स, राइट? क्योंकि when they are doing well, you don't want to buy them at very high prices. These are very good times to add, good quality stocks in your portfolio. And whenever we go on the higher end, हमें हमारे कम क्वालिटी नेम्स को कट कर देना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि हमें बहुत ज्यादा कैश पोजीशन रखना चाहिए. हो सकता है कुछ पॉकेट्स में वैल्यूएशन बढ़ जाते हैं. जैसे हमने कहा कि ब्रेड हमारे मार्केट की बहुत ह्यूज है, 2000 एक्टिव काउंटर्स हैं जहां पे हमेशा अपॉर्चुनिटीज हैं. बट लोग काफी ज्यादा न्यूज पे फोकस करते हैं, बट बिना न्यूज के भी आप देखेंगे जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, अभी न्यूज में है बांग्लादेश के कारण, राइट? बांग्लादेश से $48 बिलियन का गारमेंट और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स होते हैं यूएस के अंदर. वो रातों रात चेंज होके इंडिया नहीं ले सकता है, बट बांग्लादेश के इश्यूज के कारण जो इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स हैं यूरोप से, यूएस से, वो इंडिया आ रहे हैं. और स्ट्रक्चरली हमने काफी अच्छा ग्रो किया है कुछ सेगमेंट्स के टेक्सटाइल में, जहां पे हमारा ओवर लास्ट 4-5 इयर्स कुछ होम टेक्सटाइल्स, गारमेंटिंग के कुछ सब सेगमेंट्स जहां इंडिया ने ग्रेजुअली मार्केट शेयर लिया है. डिस्पाइट यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ हमारा एफटीए नहीं है, हमारे अनफेवरेबल ड्यूटी स्ट्रक्चर है, हमें 12% ड्यूटी लगती है और बांग्लादेश को ड्यूटी नहीं देनी होती, उसके बावजूद इंडिया कॉम्पिटिटिव रहा है. तो हमें वो स्ट्रक्चरल स्टोरीज पे ध्यान देना चाहिए. तो जैसे काउंटर है, भले ही जब वो फ्लेवर में भी ना हो, जैसे एक मंथ पहले टेक्सटाइल फ्लेवर में नहीं था, बट स्टॉक्स तब बहुत रीजनेबल मिल जाते हैं. अभी सीमेंट का बहुत टफ टाइम चल रहा है, काफी मतलब एबिटा उनका पर टन नीचे आ चुका है, बट मेरा ये मानना है कि वो काफी बॉटम आउट हो गया है. अब यहाँ से देयर बी अ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, क्योंकि द डिमांड विल कम बैक, और डिमांड आने के साथ धीरे धीरे प्राइस हाइक्स होंगे. पहले भी सीमेंट कंपनीज ने प्राइस हाइक लेने के अटेम्प्ट्स किए हैं, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुए. अभी हम सुन रहे हैं कि थोड़ा प्राइस हाइक जो दिसंबर में लिया है वो सस्टेन हो रहा है. तो ये एक सेक्टर है जहां लार्ज कैप्स और ये इंडस्ट्री काफी कंसोलिडेट हो चुकी. तो आप देखेंगे अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट कंबाइंड विद एसीसी सीमेंट, ये दो टॉप 2 नेम्स हैं. उसके बाद श्री डालमिया वगैरह है. तो ये 4-5 कंपनीज ने बल्क ऑफ द मार्केट शेयर इनका हो गया है. स्मॉलर प्लेयर्स एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं लार्ज कैप कंपनीज के अंदर. तो ये स्पेस बहुत कंसोलिडेटेड होता जा रहा है. क्लिंकर का यूटिलाइजेशन काफी अच्छे लेवल पे चल रहा है, जो प्राइसिंग डिटरमाइन करता है सीमेंट के अंदर. तो ये एक स्पेस है जहां आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर में इन्वेस्टर्स भले ही मतलब प्रीवियस क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं थे, बट आगे एक इम्प्रूवमेंट आएगा. उसके अलावा हम कुछ और सेक्टर्स देख सकते हैं, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, एसी काफी ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, बट जो फैन ओरिएंटेड कंपनीज हैं जैसे हैवेल्स, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ये प्रीमियम फैंस बनाते हैं. हैवेल्स एक लार्ज कैप कंपनी है, काफी अच्छा कर रही है. ओरिएंट इलेक्ट्रिक जैसे जैसे उन्होंने एक नई फैक्ट्री चालू करी है हैदराबाद में, ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा उनका, तो उनके मार्जिन इंप्रूवमेंट होंगे. और कंपनी एक
जो करंटली अभी मार्जिन बना रही है उसे एक अच्छा स्टेप अप ले सकती है। तो इन सेक्टर्स पे हमें फोकस करना चाहिए जहां पॉसिबिलिटी इंप्रूवमेंट की है, भले ही अभी नंबर अच्छे नहीं है, जैसे सीमेंट हो गया या ये कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज वगैरह हो गई। यस शैलेंद्र जी। चलिए बाजार में जी हाँ नीरज जी, बाजार में लगातार आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है और ध्यान दीजिए किस हिसाब से अब 23,900 आपको बहुत बखूबी से बुल्स वापस लेते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी का लो आज था लगभग 23,800 नहीं, हाँ लो था 23,870 और अब आपके सामने 23,944 ऑलमोस्ट। तो ध्यान दीजिए इस पर और ध्यान दीजिए क्वालिटी फार्मा कंपनीज पर ध्यान दीजिए, क्वालिटी आईटी कंपनीज पर, कोफोर्ज पर ध्यान दीजिए किस हिसाब से आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कोफोर्ज एक्चुअली 0.5% ऊपर है एफएनओ में, आपके सामने 95.31 प्राइस है, 95.31। और बाजार में ज़रा ध्यान देते हैं कहाँ आपको क्वालिटी में अच्छे मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा गेन के फिनटेक में ये काउंटर अब आपको 1371 पर 3-3.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नीरज जी, एक राय के फिनटेक पर जरूर बनती है आपकी तरफ से। हाँ शैलेंद्र जी, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन हो रहा है डीमेट अकाउंट्स में और वेल्थ के अंदर। यहाँ पे ब्रोकिंग वाला इम्पैक्ट भी नहीं है, तो वो कंसर्न्स भी नहीं है। यहाँ पे बस हमें देखना है कि हम ग्रेजुअली इनको लोअर वैल्यूएशंस पे एक्यूमुलेट करें इन स्टॉक्स को। शैलेंद्र जी 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 बिल्कुल सही बात है। नीरज जी आप आए और समझिए बाहर आई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस गिरावट में बहुत बहुत अच्छी बाइंग आपको अब होती हुई दिख रही है। निफ्टी अब 240 अंक नीचे है, पहले 310 अंक नीचे था और एक झड़ी सी लगी हुई उन काउंटर्स में जहां पर आप एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं। कोफोर्ज और के फिनटेक की तो मैंने बात करी ही। अब मैं आपको वापस दर्शन कराता हूं एडवांस डिक्लाइन रेशियो के। ध्यान दीजिए, हमने 165 पर शुरू किया था ब्रॉडर मार्केट्स का, अब 500 शेयर हरे निशान में हैं। यही एक क्वालिटी है जो एक अच्छे निवेशक को एक आम निवेशक से अलग करती है। आपको कोशिश करनी है कि गिरावट को खरीदें। अब देखिए निफ्टी 500 में जहां सिर्फ 12 शेयर हरे निशान में थे, अब 54 हैं। निफ्टी 50 में अभी भी 48 शेयर लाल निशान में है, लेकिन मेरे सामने एक इतनी तेज़ी दिख रही है क्वालिटी काउंटर्स में। CESE को देखिए 1% ऊपर 186.70। NMDC को देखिए आपके सामने 213 का लक्ष्यांक आता हुआ दिख रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखिए, धकाधक तेज़ी 5644.2% हायर। मैं बताना चाहता हूं BSE का इंट्राडे लो क्या होगा और आप ये समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बाइंग होती हुई दिख रही है। 1 मिनट दीजिए बस मेरे को, इसका स्नैपकोट मैं निकालता हूँ आपके लिए। जी हाँ, दिन का लो BSE का 5,455 था और आपके सामने 5,637 पर चलता हुआ। यही एक बात दर्शाती है कि किस हिसाब से आप बढ़िया मूव ट्रैक करते हैं। अच्छा खासा मोमेंटम आपके सामने अब स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। कौन से शेयर्स हरे निशान में हैं? DB रियल्टी, इस पर ध्यान दीजिए, रियल एस्टेट स्पेस में अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। CDSL पर ध्यान दीजिए, BSE के साथ आपको चलती हुई दिखती है कंपनी। और इन्फोसिस, आइए इन्फोसिस के दर्शन करते हैं। बाजार इस वक्त निफ्टी सिर्फ 212 अंक नीचे है और आपने अभी 310 अंक का कट देखा था। इन्फोसिस 1951 पर चल रहा है और अभी भी आपको ये लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, दिन का लो था 1920, तो 1920 के लो से 1950। तो ये देखिए किस तरीके से आपको बाइंग वापस क्वालिटी काउंटर्स में आती हुई दिख रही है। पॉलिसी बाजार को देखिए,
यहाँ पर एक आप जो मूव देख रहे हैं दिन के लो से, ये काउंटर भी आपको एक अच्छा बाउंस देता हुआ दिख रहा है। नीरज जी, पॉलिसी बाजार पर कुछ चर्चा करेंगे क्या? नहीं शैलेंद्र जी, हम पॉलिसी बाजार में इन्वेस्टर नहीं है तो उतना एक्टिवली फॉलो नहीं किया, बट बहुत अच्छा बिजनेस है, काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, बट हमें मतलब हमने उसे ग्रेजुअली मतलब उतना फॉलो नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं। कुछ ऐसे शेयर जहां पर आप अपने पीएमएस में निवेशित हैं, ये बताइए हाईएस्ट वेटेड काउंटर कौन सा है जहां पर एक्सिस सिक्योरिटीज के पीएमएस में सबसे ज्यादा पैसा लगाओ? तो ओवरऑल हम देखिए हमारी तीनों स्कीम्स वगैरह में कंबाइंड हमारी लार्ज होल्डिंग्स में हमारे पास इंडस टावर्स है, एचपीसीएल है, महिंद्रा सीआई है, हमारे पास फार्मा नेम्स हैं, सन फार्मा, सिप्ला, लुपिन, अरबिंदो, सुवेन फार्मा, एमी ऑर्गेनिक्स। हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में हमारे पास वोल्टाइम ट्रांसफार्मर है, किर्लोस्कर न्यूमेटिक है। फार्मा नेम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, ये भी काफी सिग्निफिकेंटली है हमारे पास। सीमेंट स्पेस में हमारे को अल्ट्राटेक सीमेंट पसंद है, तो ये हमारी काफी ये लार्ज पोजीशंस हैं शैलेंद्र जी। किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स। जी जी जी, बिल्कुल। किर्लोस्कर न्यूमेटिक, एक मिनट, मैं ज़रा ये लिख रहा हूँ। नीरज जी, आप बड़ी मुश्किल मिलते हैं, तो इस पर ज़रा ध्यान देना पड़ता है। इंडस टावर्स, ज़रा दोबारा आप नाम दोहराएंगे? इंडस टावर्स, किर्लोस्कर हिंदुस्तान न्यूमेटिक्स, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, और तीन कौन से आपने नाम? एचपीसीएल, एचपीसीएल, महिंद्रा सीआई, हाँ, ऑटो एंसिलरीज में संसेरा इंजीनियरिंग और सन जी हाँ, फार्मा, सिप्ला, सनसेरा, हाँ, और अल्ट्राटेक सीमेंट। सन, सिप्ला, अल्ट्राटेक सीमेंट। ओके, तो ये आपके ऑलमोस्ट टॉप 10 काउंटर्स हो गए जहां पर एक्सिस सिक्योरिटीज़ का सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स का पैसा, एक्सिस सिक्योरिटीज़ पीएमएस सबसे ज़्यादा पैसा आपका लगा हुआ है। नीरज जी, आप आए और बाहर आई पूरे वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस पर, मतलब समझिए क्या चमक आ रही है इस वक्त के फिनटेक में। एंजल वन आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईईएक्स दिन के उच्चतम लेवल से बढ़ता हुआ, हरा निशान बीएसई में, सीडीएसएल और अन्य कई काउंटर्स बढ़िया ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बीएसई पर कुछ टिप्पणी कीजिए। बीएससी पे ऑब्वियसली ये एफ एंड ओ का इम्पैक्ट आ सकता है, बट उस पे एक दूसरी राय ये भी बन रही है कि एटलीस्ट जो मार्केट शेयर है बिटवीन बीएससी और एनएसई, वो उसमें स्टेबिलिटी रहेगी या इम्प्रूवमेंट आएगा। तो भले ही थोड़ा वॉल्यूम और प्रीमियम पे जैसे हमने डिस्कस किया कि सब ब्रोकिंग में 10 से 30% का इम्पैक्ट आ सकता है, चाहे वो बीएससी हो, एनएससी हो, जो ब्रोकर्स वगैरह हैं, बिकॉज ऑफ एफ एंड ओ रेगुलेशंस। बट पहले जो स्ट्रक्चर था कि जैसे कैश के अंदर बीएससी का थोड़ा सा मार्केट शेयर था, फिर उन्होंने एफ एंड ओ वगैरह चालू किया एंड देयर इम्प्रूविंग देयर मार्केट शेयर। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म राय लोगों की अब बीएससी पे ये बन रही है कि उनका मार्केट शेयर एफ एंड ओ में, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि सबका एक एक्सपायरी वगैरह है, तो बीएससी एक रीजनेबल मार्केट शेयर ले पाएगा लॉन्ग टर्म में। तो भले ही नियर टर्म में एक इम्पैक्ट है नंबर्स के अंदर 1-2 क्वार्टर्स, बट वो धीरे धीरे इन्वेस्टर्स वापस मार्केट में आ जाते हैं, एक्टिविटी वापस इंप्रूव होती है। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अब ये व्यू क्लियर बन रहा है कि बीएसई का एक मार्केट शेयर, और रेगुलेटर्स भी चाहेंगे कि दो एक्सचेंजेस दोनों काफी रोबस्ट रहें और सेकंड एक्सचेंज भी कंट्री में काफी अच्छा करे। तो उस सेंस में मीडियम टर्म में बीएसई का एज ए बिजनेस इज लुकिंग वेरी गुड शैलेंद्र जी, डिस्पाइट द नियर टर्म हिकअप्स जी, ऑन द ब्रोकिंग साइड। आपका सबसे ज़्यादा पैसा क्लाइंट्स का नीरज जी लगा हुआ है इंडस टावर्स में। 200 डीएमए पर यह काउंटर मिलता हुआ है। एक बहुत ही अच्छी रूलिंग इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल से आती हुई डेप्रिसिएशन का किस तरीके से संभाल कर सकती है इंडस टावर्स। साथ ही साथ वोडाफोन पीएलसी अब नमस्कार कर चुकी है इस काउंटर को, और यहाँ से किस प्रकार की मजबूती, किस प्रकार का परफॉर्मेंस आप देखते हैं इंडस टावर्स में?
कुछ समय पहले 450 रुपए था और आज 338। शैलेंद्र जी, ये काउंटर हम पिछले 1 साल पहले से खरीद रहे हैं, जहां मार्केट में पूरा डिसबिलीफ था। पहले ये लग रहा था कि वोडाफोन सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो हम उस डिसबिलीफ में खरीद रहे थे जब इंडस टावर्स यहाँ से सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइसेस में था। तो उसका एक डेफिनेटली एक बेनिफिट आया और लोगों ने देखा कि वोडाफोन ने इक्विटी रेज किया, वोडाफोन ने भी काफी अच्छा किया और इंडस टावर्स, जैसे आपने कहा, 450 के हाई तक बनाया था। उसके बाद और कुछ न्यूज फ्लोज आए, जैसे आपने कहा कुछ ट्रेड फ्लोज भी हुए हैं। वोडाफोन पीएलसी ने इंडस टावर्स का अपना स्टेक बेचा है। एयरटेल हैज कंसोलिडेटेड, वो 50% शेयर की होल्डिंग पे पहुंच गया इंडस के। कुछ एडवर्स न्यूज भी आई थी और कुछ पॉजिटिव न्यूज भी आई हैं इस काउंटर में। एडवर्स न्यूज में यह कि एजीआर पे बेनिफिट नहीं मिले टेलीकॉम कंपनीज को। अगर एजीआर बेनिफिट मिलता तो वोडाफोन के लिए काफी अच्छा रहता, बट गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स भी दिए हैं कि जैसे बैंक गारंटी की जरूरत नहीं है। तो यहां से वोडाफोन विल बी एबल टू सर्वाइव। एक राउंड ऑफ टैरिफ हाइक हो चुका है नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स में, क्योंकि इन कंपनीज को काफी कैपेक्स भी करना है। 4G कवरेज के अलावा 5G कवरेज बिल्डअप करनी है। एयरटेल एंड जियो ने कवरेज बनाई है अपनी 5G में, वोडाफोन को अपनी कवरेज बनानी है, बीएसएनएल भी अपनी कवरेज बढ़ाना चाह रहा है। तो उनको ये टेलीकॉम टावर्स कंपनीज की जरूरत पड़ेगी। और टेलीकॉम टावर कंपनीज भी अब कंसोलिडेट हो चुकी हैं। 3-4 बड़े नाम हैं, जैसे ब्रुकफील्ड समिट एक बड़ा नाम है जो लगभग 2.5 लाख उनके टेलीकॉम टावर हैं। इंडस टावर के भी लगभग 2,30,000 टेलीकॉम टावर हैं। तो ये 2-3 कंपनीज प्राइमली बेनिफिट करेंगी जो भी कवरेज बढ़ा रही हैं टेलीकॉम कंपनीज। और जैसे नेक्स्ट ईयर एक टैरिफ हाइक होगा तो वोडाफोन नेक्स्ट 2 इयर्स में थोड़ा कैश पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और उससे पहले जब बैंक से फंडिंग मिलेगी वोडाफोन को, तो वो अपना कैपेक्स कर पाएगा। उन्होंने ऑलरेडी इक्विपमेंट कंपनीज जो होती हैं, नोकिया, एरिक्सन वगैरह से टाई अप कर लिया है। नेक्स्ट क्वार्टर से वो अपना कैपेक्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 3 मंथ्स का उन्होंने जो इक्विपमेंट और कैपेक्स का प्लान है Q4 का FY25 वो फाइनलाइज कर दिया है। और टावर कंपनी से दे आर अप्रोचिंग एंड दे टेलिंग कि कहाँ कवरेज बढ़ाना है। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये इंडस टावर्स में सुधार आता रहेगा। और इंडस टावर एक बहुत अच्छी यूटिलिटी कंपनी है, जिसका ये फायदा होता है कि आपने एक टेलीकॉम टावर बनाया है, आपका एक प्राइमरी टेनेंट है जो भारतीय एयरटेल है। उसी टावर पे अगर आपको दूसरा टेनेंट भी मिलता है तो आपका आरओई बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है। तो जहां आप एक टावर पे एक ही टेनेंट हो तो अपना पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर आपका टेनेंट अगर वन एंड ओवरऑल वहां पे 2 टावर हो गया, बट कंपनी एवरेज मूव्स इज टू 1.5 1.7 एंड सो ऑन, आपकी आरओई बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है। तो हम देखेंगे टेनेंसी रेशियोज इंडस टावर के बढ़ेंगे जब ये कवरेज बढ़ेगा वोडाफोन वगैरह का, और उसको कंपनी को हेल्प मिलेगी री रेटिंग में। तो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव आउटलुक है इंडस टावर्स का गोइंग फॉरवर्ड। चैलेंज जी। जी, मैं आपको किस तरीके से समझाऊं कि क्या धकाधक तेजी हो रही है। परसिस्टेंट सिस्टम्स को देखिए, इंट्राडे लो था 6,350। एट द मोमेंट द काउंटर इज एट 6,577. Just look at the Nifty IT index, ladies and gentlemen. Forget about everything. The low of the Nifty IT index was 44,430, and we are now at 45,200. So it has appreciated to the extent of 600 plus 200, 800 points from the intraday low. Let's look at the low on the Nifty. The low on the Nifty, which is now still down 218 points, was somewhere like 23,870, and we are at 23,984. So it is a 120 point uptick. And now again let us visit the advanced decline ratio, and it will show you how sensible, deep pocketed and good investors have taken opportunity. When we started the advanced decline ratio, it was just 165 shares in the green versus 2,047 in the red. Now 645 shares are in the green versus
1657 shares in the red. Look at the advanced decline ratio in NSE 500. We started with only 12 shares in the green. Now 88 shares are in the green versus 410 in the red. And all that you see is quality buying happening in mid cap counters from the IT space. Persistent 6609, Emphasis, Mastech, good quality top end pharma counters. Dr. Reddy's is 2% higher. Torrent Pharma is 1.3% higher. Look at how sharply Mazgaon Dock has moved from intraday low. Just a moment, let me just get into defense and give you a view on Mazgaon Dock. It is the low today was, ladies and gentlemen, 4941, and we are at 5100. 49, it is up 150 points. Look at MCX 6686. Let me tell you what was the low on MCX and how it has moved. The low on MCX was 6500. We are now at 6680. 180 points on the Nifty, and that is how, ladies and gentlemen, the move is. Let's hope that we close above 24,000 today. We are already at 962, and there is very decent buying happening across the board. MobiKwik still up 12%. Look at how HDFC Bank has moved. HDFC Bank's low was 1780 and it is now at 1791. ICICI Bank, the low was 1286, we are at 1300. TCS, the low was 4282, we are at 4041. So that's a 60 point uptick on TCS alone. So this is how, ladies and gentlemen, pain is purchased, and that is how money is made. Before we bid goodbye to Neeraj ji, my final question to him is on ITC. क्या लगता है नीरज जी, इस लेवल पर आईटीसी में क्या किया जाए? एक डीमर्जर ड्यू है होटल्स बिजनेस का, उसका क्या वैल्यूएशन आप आंकते हैं और क्या राय रखते हैं आईटीसी पर 470 रुपए के आसपास? हमारा बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है आईटीसी में, और हम इस काउंटर को होल्ड भी करते हैं अपनी कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी में। तो सिगरेट्स का एक बहुत ही स्टेबल बिजनेस है। एफएमसीजी में उन्होंने काफी अच्छा किया है। होटल बिजनेस के बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, और हम आईटीसी के अलावा मतलब इंडियन होटल्स भी होल्ड करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये सारे बिजनेसेस आईटीसी के ये आराम से मिड टीन्स की काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ आएगी यहाँ पे। तो ये स्टॉक के रिटर्न्स भी हम मिड टीन्स में मानते हैं। तो आप करंट प्राइस से एक मिड टीन्स 15 से 20% की कंपाउंडिंग को आप बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि डीमर्जर से ये फायदा होगा कि इसके डिफरेंट बिजनेस को पूरी तरीके से एप्रिशिएट किया जाएगा। इसके बिजनेस को कंपेरेबल से देखा जाएगा कि इंडियन होटल्स के क्या मल्टीपल्स हैं और आईटीसी होटल्स को क्या मल्टीपल्स मिलते हैं। तो बेटर अप्रिशिएशन होगा सब पार्ट्स का, और इनमें अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी अच्छी है। तो यहाँ से हमारा मानना है कि यहाँ से हमें आराम से एक 15 से 20% की कंपाउंडिंग आईटीसी में मिल सकती है। और जाने से पहले नीरज जी, आप कुछ टिप्पणी करिए उन कायदे कानूनों पर जो एसएमई के आईपीओस को गवर्न करते हैं, जहां पर सेबी ने और एक्सचेंजेस ने लगाम कसी है इन टर्म्स ऑफ कितना ऑफर फॉर सेल हो सकता है, कितना प्रमोटर का प्रॉफिट होना चाहिए आईपीओ लाने से पहले पिछले 1-2 सालों में। इससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्या बाज़ार में कुछ और अच्छी क्वालिटी के आईपीओ आएंगे? क्या छटनी होगी उन लोगों में जो शायद रिटेल निवेशक का बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा उनसे छीनना चाहते हैं? तो शैलेंद्र जी, मेरे को लगता है कि हमारा रेगुलेटर यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि रेगुलेटर को ये भी चाहिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड रहे। उससे एक फ्री मार्केट मैकेनिज्म देना है, बट साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इन्वेस्टर का पैसा प्रोटेक्टेड रहे। जो फंड रेस ये कंपनीज कर रही हैं उनका एंड यूज सही मायने में किया जाए, कंपनीज के अकाउंटिंग गवर्नेंस प्रैक्टिस सही हो,
और जैसे आपने कहा कि जो भी मतलब ऑफर फॉर सेल है और उन सब प्राइमरी पर्पसेस का सेबी को ध्यान रखना है और एक बैलेंस रखना है कि नई कंपनीज आके एक्सचेंजेस से जुड़े, एसएमई आईपीओज में, मेन बोर्ड आईपीओज में। तो सेबी इन दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंपनीज आ रही हैं, मार्केट में लिस्ट हो रही है, बट हम साथ में ये देखते हैं कि इस फ्री मार्केट मैकेनिज्म में कुछ कंपनीज खासकर एसएमई स्पेस में इन चीजों का फायदा भी ले सकती हैं। तो इसलिए सेबी का ये बैलेंस अप्रोच लेना बहुत ही इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा, जिससे सेबी ये ध्यान दे रही है कि किस तरीके से फंड रेज हो रहा है, किस फॉर्मेट में फंड रेज हो रहा है, इससे इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टेड रहें और जहां उन्हें डाउट आ रहा है तो वो उन आईपीओस को होल्ड भी कर रही हैं। तो ये मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए शैलेंद्र जी ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है। नीरज जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और इस विचलित दिन, इस वॉलेटाइल डे पर आप हमारे साथ रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी क्रिसमस। मैं उम्मीद करता हूं जो आपने 10 शेयर्स अपने एक्सिस सिक्योरिटीज़ पीएमएस में खरीदे हैं वहां आपको दिन दुगनी चार चौगनी उन्नति मिले। धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपके व्यूअर्स को भी मैरी क्रिसमस। चलिए ladies and gentlemen, let's wrap up the market. The first 45 minutes of trade have been painful, but quality has been purchased into. The broad part of the market is in the red, but well off intraday lows. It essentially means that quality investors, sensible investors, those with deep pockets have used this gap down as an opportunity to get back into quality. Look at defense counters such as Mascot Dock. Look at quality wealth creators such as BSE, CDL, K Fintech. Look at the entire IT pack where the purchase has been made in counters like Persistent, in counters like Mastech, in counters like Emphasis, Infosys, TCS. All of them are sharply higher from intraday lows. Let us hope that this event, which triggered before it came a very sharp sell-off in the Indian markets, is now behind us and we have quality purchases coming in. I'm leaving the Nifty at 23,961 with you, down 236 points. Nifty Bank 51,585 and of course a 500-point cut on the Nifty IT index, but remember it was down 1100 points. So quality is being purchased into, and that is how it should be, ladies and gentlemen. Remain glued to Business Today Television. There's a lot that's happening on the other side of the break. Vijay Mallya case, 14,131.6 crore, 20.15 crores, 19.40 crore, 185.13 crore. No haircut has happened. Big people are allowed to take the money. Small people are being punished. No way. We all question about ED. The return